सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बुक रीडिंग सेशन में आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर जब ये बुक खत्म होगी यू विल find a great change in yourself. I have not yet encountered a person interested in trading who didn't resist the notion of creating a set of rules. The resistance is not always overt. Quite the contrary, it's usually very subtle. We agree on the one hand that rules make sense, but we really have no intention of doing whatever is being suggested. This resistance can be intense and it has a logical source. Most of the structure in our minds was given to us as a result of social upbringing and based on choices made by other people. In other words, it was instilled in our minds but did not originate in our minds. This is a very important distinction. In the process of instilling structure, many of our natural impulses to move, express, and learn about the nature of our existence through our own direct experience were denied. Many of these denied impulses were never reconciled and still exist inside of us as frustration, anger, disappointment, guilt, or even hatred. The accumulation of these negative feelings acts as a force inside our mental environment, causing us to resist anything that denies us the freedom to do and be whatever we want when we want. Yes. In other words, the very reason we are attracted to trading in the first place, the unlimited freedom of creative expression, is the same reason we feel a natural resistance to creating the kinds of rules and boundaries that can appropriately guide our behavior. It's as if we have found a utopia in which there is complete freedom, and then someone taps us on the shoulder and says, "Hey, you have to create rules, and not only that, you also have to the discipline to abide by them." The need for rules may make perfect sense, but it can be difficult to generate the motivation to create these rules when we have been trying to break free of them most of our lives. It usually takes a great deal of pain and suffering to break down the source of our resistance to establish and abiding by a trading regime that is organized, consistent, and reflects prudent money management guidelines. Now, I am not implying that you have to reconcile all of your past frustrations and disappointments to become a successful trader, because that's not the case. And you certainly don't have to suffer. I have worked with many traders who have achieved their objectives of consistency and haven't done anything to reconcile their backlog of denied impulses. However, I'm implying that you can't take for granted how much efforts and focus you may have to put into building the kind of mental structure that compensate for negative effects denied impulses can have on your ability to establish the skills that will assure your success as a trader and based on choices made by other people. In other words, it was instilled in our minds but did not originate in our minds. This is a very important distinction. In the process of instilling structure, many of our natural impulses to move, express, and learn about the nature of our existence through our own direct experience were denied. Many of these denied impulses were never reconciled and still exist inside of us as frustration, anger, disappointment, guilt, or even hatred. The accumulation of these negative feelings acts as a force inside our mental environment, causing us to resist anything that denies us the freedom to do and be whatever we want when we want. Yes. Can you scroll up? Yeah. In other words, the very reason we are attracted to trading in the first place, the unlimited freedom of creative expression,
is the same reason we feel a natural resistance to creating the kinds of rules and boundaries that can appropriately guide our behavior. It's as if we have found a utopia in which there is complete freedom, and then someone taps us on the shoulder and says, "Hey, you have to create rules, and not only that, you also have to the discipline to abide by them." The need for rules may make perfect sense, but it can be difficult to generate the motivation to create these rules when we have been trying to break free of them most of our lives. It usually takes a great deal of pain and suffering to break down the source of our resistance to establish and abiding by a trading regime that is organized, consistent, and reflects prudent money management guidelines. Now, I am not implying that you have to reconcile all of your past frustrations and disappointments to become a successful trader, because that's not the case. And you certainly don't have to suffer. I have worked with many traders who have achieved their objectives of consistency and haven't done anything to reconcile their backlog of denied impulses. However, I'm implying that you can't take for granted how much efforts and focus you may have to put into building the kind of mental structure that compensate for negative effects denied impulses can have on your ability to establish the skills that will assure your success as a trader. वेरी नाइस, वेरी नाइस। संतोष जी अपनी लर्निंग शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैम इसमें ऑथर ये बताना चाह रहा है कि whenever you are going to do trading, so there should be a proper structure, because we should have proper rules and we should follow all those rules. Initially वो difficult होगा हमें follow करना, because the kind of environment जिसमें हम grow up हुए हैं उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टिंग से ही। तो बिकॉज जो रूल्स हम बनाते हैं उनको तोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वी नीड टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ मार्केट, एंड वी हैव टू हैंडल आवर मनी मैनेजमेंट सिनेरियोज प्रॉपर्ली। सो ये बोलना चाहता है इसमें ऑथर कि whatever rules we have to follow them strictly, even if we have to face the pain and challenges. So second problem is failability. Trading can be characterized as a pure unencumbered personal choice with the immediate outcome. Remember, nothing happens until we decide to start. It lasts as long as we want, and it doesn't end until we decide to stop. All these beginnings, middles, and endings are the result of our interpretation of the information available and how we choose to act on our interpretation. Now, we may want the freedom to make choices, but that doesn't mean we are ready and willing to accept the responsibility for the outcomes. Traders who are not ready to accept responsibility for the outcomes of their interpretations and actions will find themselves in a dilemma. How does one participate in an activity that allows complete freedom of choice and at the same time avoid taking responsibility if the outcome of one's choices are unexpected and not to one's liking? The hard reality of trading is that if you want to create consistency, you have to start from the premise that no matter what the outcome, you are completely responsible. This is a level of responsibility few people have aspired to before they decide to become traders. The way to avoid responsibility is to adopt a trading style that is, to all intents and purposes, random. I define random trading as poorly planned trades or trades that are not planned at all. It is an unorganized approach that takes into consideration an unlimited set of market variables which do not allow you to find out what works on a consistent basis and what does not.
Randomness is unstructured freedom without responsibility. It's very nice line. Randomness is unstructured freedom without responsibility. When we trade without well-defined plans and with an unlimited set of variables, it's very easy to take because there's always some variable we didn't know about and therefore couldn't take into consideration beforehand. If the market's behavior were truly random, then it would be difficult, if not impossible, to create consistency. If it's impossible to be consistent, then we really don't have to take responsibility. The problem with the logic is that our direct experience of the markets tells us something different. The same behavior patterns present themselves over and over again, even though the outcome of each individual pattern is random. The outcome of a series of patterns is consistent, statistically reliable. This is a paradox, but one that is easily resolved with the disciplined, organized, and consistent approach. I have worked with countless traders who would spend hours doing market analysis and planning trades for the next day. Then instead of putting on the trades they planned, they did something else. Yeah, I did the same thing actually. The trades they did put on the trades they did put on were usually ideas from friends or tips from the broker. I probably don't have to tell you that the trades they originally planned but didn't act on were usually the big winners of the day. Thank you संतोष जी. इसके जो पहले भी पढ़ा ना, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज आई कुडंट लिसन प्रॉपरली. इधर से हमने स्टार्ट किया था आज, प्रॉब्लम फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हियर ऑथर बता रहा है कि वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फेलियर. जो भी हम मार्केट में जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, वेदर इज प्लान्ड और अनप्लान्ड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि वी डू स्टडी, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है देन हम अपने हिसाब से ही करने लग जाते हैं. मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हैं, जो भी जैसे कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी बनता है, लेकिन हम उसका आउटपुट रैंडम आता है. एक हर स्ट्रक्चर का, बट आउटपुट आता है बेस्ड ऑन और जो भी हम स्टडी करेंगे उस स्ट्रक्चर के हिसाब से. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है कि हम शाम को कुछ स्टडी किया लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम हम कुछ और कर लेते हैं. कुछ फ्रेंड्स ने बोल दिया, कुछ टिप्स ब्रोकर्स से सुन लिया कि इस स्टॉक में ये होने वाला है, न्यूज़ वालों ने बता दिया. हमारी स्टडी कुछ और बोलती है, न्यूज़ वाले कुछ और बोल देते हैं, तो हम न्यूज़ वाले के साथ चले जाते हैं, अपनी स्टडी छोड़ देते हैं. राइट, लॉस कर रहे हैं. तो वो चीजें हैं. तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमारे हर एक एक्शंस की, जो ये बताता है, और हमें अपनी स्टडी के साथ स्टिक रहना चाहिए. ये सब चीजें. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिया था. बिग विनर्स ऑफ द डे, यहाँ से करना है हमें स्टार्ट. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, राइट? ओके, प्लीज गो, प्रोसीड. This is a classic example of how we become susceptible to unstructured random trading because we want to avoid responsibility. When we act on our own ideas, we put our creative ability on the line, and we get instant feedback on how well our ideas work. It is very difficult to recognize away any unsatisfactory result. On the other hand, when we enter an unplanned random trade, it is much easier to shift the responsibility by blaming the friend or the broker for their bad ideas. There is something else about the nature of trading that makes it easy to escape the responsibility that comes with creating structure in favor of trading randomly. It is a fact that any trade has the potential to be a winner, even a big winner. That big winning trade can come your way whether you are a great analyst or a lousy one.
whether you do not do, whether you do or don't take responsibility. It takes effort to create the kind of disciplined approach that is necessary to become a consistent winner. But as you can see, it is very easy to avoid this kind of mental work in favor of trading with an undisciplined random approach. Problem: addiction to random rewards. Basically, the last paragraph that we just read, इसमें ये बता रहे हैं कि समराइज करते हैं फिर आगे बढ़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इम्पोर्टेंट है, भले ही वो टिप्स किसी दूसरे से आती है या हमारे खुद के एनालिसिस होता है, क्योंकि जब हम दूसरे टिप्स से पैसे बना लेते हैं तो हम लगता है कि ठीक है, बट जब नहीं होता है तो हम उनको ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से मेरे पैसे चले गए। तो बेटर है कि हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एनी एक्शन दैट वी आर टेकिंग फॉर मेकिंग मनी। क्योंकि अगर किसी ने टिप्स आपको भी दी भी है किसी ब्रोकर ने, तो भाई उस टिप को अप्लाई करने वाले तो हम ही है ना, या टीवी वालों ने न्यूज बताया उसको एक्सेप्ट करने वाले भी हम ही है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी जरूरी है। क्या होता है कि अगर हमारा फायदा होता है किसी से तो हम ये सोचते हैं क्योंकि मैंने एक्शन लिया इसलिए फायदा हुआ, लेकिन नुकसान होता है तो हम सोचते हैं उसने बताया था ना इसलिए मेरा नुकसान हो गया। तो हेयर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दिस बिहेवियरल चेंज कि आप फायदे में हो चाहे नुकसान में हो, आपको अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर मिस्टेक्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप where you are going to correct it, है ना। Problem addiction to random rewards. So several studies have been done on the psychological effects of random rewards on monkeys. For example, if you teach a monkey to do a task and consistently reward it every time the task is done, the monkey quickly learns to associate a specific outcome with the efforts. If you stop rewarding it for doing the task within a very short period of time, the monkey will simply stop doing the task. It won't waste its energy doing something that it has now learned it won't be rewarded for. However, the monkey's response to being cut off from the reward is very different. If you start out on a purely random schedule instead of a consistent one, when you stop offering the reward, there is no way the monkey can know that it will never be rewarded again for doing the task. Every time it was rewarded in the past, the reward came as a surprise. As a result, from the monkey's perspective, there is no reason to quit doing the task. The monkey keeps on doing the task. The monkey keeps on doing the task even without being rewarded for doing it. Some will continue indefinitely. I'm not sure why we are susceptible to the becoming addicted to random rewards. If I had to guess, I would say that it probably has something to do with the euphoria inducing chemicals that are released in our brain when we experience an unexpected pleasant surprise. If a reward is random, we never know for sure if and when we might receive it. So expending energy and resources in the hope of experiencing the wonderful feeling of surprise again is not difficult. In fact, for many people it can be very addicting. On the other hand, when we expect a particular outcome and it doesn't come out about, we are disappointed and feel bad. If we do it again and get the same disappointing outcome, it's not likely that we will keep doing something we know will cause us emotional pain. The problem with any addiction is that it leaves us in a state of choicelessness. To whatever degree the addiction dominates our state of mind, to that same degree of focus and effort will be geared toward fulfilling the object of that addiction. Other possibilities that exist in any given moment to fulfill other needs, like the need to trust ourselves and not to object too many of our assets to risk, are either ignored or dismissed. We feel powerless to act in any other way than to satisfy the addiction.
An addiction to random reward is particularly troublesome for traders because it is another source of resistance to creating the kind of mental structure that produces consistency. So basically, the writer is focusing here to letting us know that कि जब हम विदाउट एनी प्लान को ट्रेड करते हैं तो वो हमारा रैंडम रिवॉर्ड्स के कारण हमारा एडिक्शन बन जाता है, क्योंकि अगर सपोज कंसिस्टेंट जो चीज नहीं है और हमें सरप्राइज में अगर सपोज कभी पैसे बन गए तो ऐसा लगता है कि इसी तरह पैसे बन सकते हैं बार बार तो क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो हमेशा होप रहेगी कि शायद उस टाइम अभी भी बन सकता है, शायद आ जाए। हाँ। तो वो एडिक्टेड हो गया है कि इस बार आ जाएंगे, इस बार आ जाएंगे। वो उसी चीज में फेलियर होते होते आदमी क्या होता है कि फिर वो प्रोसेस को नहीं फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली वो एक एडिक्टेड हो जाते हैं कि हमें ट्रेड करना है, पैसा लाना है और एक टाइम आएगा कि मैं बहुत पैसा बना लूंगा। बट राइट, ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक प्रोसेस और कंसिस्टेंसी वाला जो प्लानिंग बेसिकली मेजर मिसिंग होती है यहाँ पे, इज माय अंडरस्टैंडिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है इस बुक का, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं, प्रॉब्लम एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स, राइट। तो मैं थोड़ा सा अपनी शेयरिंग देती हूँ जो मैंने यहाँ सीखा कि बेसिकली आपने देखा यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया मंकी वाला, राइट, कि आप कुछ भी काम जब हम करते हैं तो ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, अगर इफ यू आर सैड देन ऑल्सो, इफ यू आर हैप्पी देन ऑल्सो। तो जो रैंडम रिवॉर्ड मिलता है ना, अचानक से आपको बहुत सारे पैसे मिले, तो वो एक वर्ड सबने बहुत सुना होगा, किक। तो आई गेट अ फीलिंग कि वो किक जब मिलता है ना, अरे यार ये करने से तो मेरे बड़े पैसे बन गए, और वो ही उसको एडिक्शन में डाल देता है। एंड ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ दैट एडिक्शन। एम आई राइट? जब एक बार आप ऑप्शन बाइंग करें और आपका वो चल जाए और पैसे बन जाए, उसके बाद ये लगता है कि भाई इससे तो बेस्ट और तरीका हो नहीं सकता और इससे पैसे बनते हैं, और उस चीज की लग जाती है एडिक्शन, क्योंकि आपको वो किक, वो हाई फिर से चाहिए। जैसे आप चाय पियो, कॉफी पियो कैफीन की, या मतलब आई मीन कुछ बुरे सिगरेट, शराब, XYZ कुछ भी, किसी भी चीज की जो लत लगती है वो उस हाई को पाने के लिए ही लगती है। तो ये सेम चीज रैंडम रिवॉर्ड्स पाने के लिए का भी जो है वो एक तरीके का एडिक्शन ही होता है, जिसमें कि हम बार बार जाते हैं और उस खुशी को फिर से पाना चाहते हैं, फिर से महसूस करना चाहते हैं, और उसके चक्कर में हमारे पैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जाते रहते हैं। तो इस एडिक्शन में नहीं पड़ना है हमें, अपने आप को ये सिखा देना है कि भाई एक प्रोसेस फॉलो करने से ही धीरे धीरे जो हमें सक्सेस मिलेगी, दैट इज द एक्चुअल सक्सेस फॉर अ रियल ट्रेडर। क्योंकि एडिक्शन हो गया ना, उसको एडिक्शन हो गया है ना। इधर देखो एक पर्टिकुलर टर्म भी यूज हुआ है, यूफोरिया इंड्यूसिंग केमिकल्स that are released in our brains when we experience an unexpected pleasant surprise। तो ये सब जो है वो बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है और इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इससे निकल पाएंगे। आई कैन सी अंसार जी विद अस। अंसार जी आप पढ़ेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। या श्योर। हाँ प्लीज। Our upbringing has programmed us to function in a social environment, which means we have acquired certain things, strategies to fulfill our needs and desire that are geared towards social interaction. Not only have we learned to depend on each other to fulfill their the needs, wants, and desires we cannot fulfill completely on our own, but in the process we have acquired many social based controlling and manipulating techniques for assuring that the other people have in a manner that is consistent with what we want. The market may seems like a social endeavor because there are so many people involved, but there are not. If in today's modern society we have learned to depend on each other to fulfill basic needs, then the market environment
even though it exists in the midst of modern society, can be characterized as a psychological wilderness where it is truly every man or woman for himself or herself. Not only can we not depend on the market to do anything for us, but it is extremely difficult, if not impossible, to manipulate or control anything that the market does. Now, if we have become effective at fulfilling our needs, wants, and desire by learning how to control and manipulate our environment, but suddenly find ourselves as a trader in an environment that does not know, care, or respond to anything that is important to us, where does that leave us? You are right if you said up to the proverbial creek with a problem is that none of these techniques work with the market. The market doesn't respond to the control and manipulate unless you are very large trader. However, we cannot control our perception and interpretation of the information as well as own behavior instead of controlling our surroundings. So they confirm our ideas of the way things should be. We can learn to control ourselves, then we can perceive information from the most objective perspective possible and structure or our mental environment so that we always behave in a manner that is in our own best interest. पहले इसी को ही वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया था प्रॉब्लम, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, राइट? तो अंसार जी आप कुछ शेयर करेंगे पहले, अंसार जी से उनकी लर्निंग लेते हैं। मैम, जहाँ तक मुझे समझ आया था, अपब्रिंगिंग हैज प्रोग्राम पर सर्टेन सोशल नॉलेज व्हिच वी हैव अक्वायर्ड स्ट्रेटजी। मतलब जहाँ तक जो हमारी अपब्रिंगिंग हुए है, मतलब छोटे से हम बड़े हुए हैं, तो हम जैसे हम इन्वायरमेंट में हुए हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं कि हमारी छोटी छोटी सी नीड्स, डिजायर जो है वो फुलफिल हो जाए। ये टुवर्ड सोशल इंटरेक्शन, मतलब जो आसपास के लोग हैं उन जैसी हमारी भी हो जाए। नॉट ओनली वी हैव लर्न टू डिपेंड ऑन ईच अदर टू फुलफिल देयर नीड्स, वन डिजायर कैन नॉट फुलफिल कंप्लीट। और कहना चाह रहा है कि मतलब वांट जो डिजायर है वो कभी भी हमारी जो डिजायर है या भूख है किसी भी चीज की, वो कभी फुलफिल हो। हाँ, तो जो मुझे समझ आया इसमें, जैसे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रही है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, तो इसमें इंटरनल कंट्रोल ये हो जाएगा कि जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, कोई भी ह्यूमन बीइंग आप देख लो, he think that he is superior than others, राइट, और उसका वो सेल्फ ईगो रहता है उसमें। और बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें वो ग्रो अप हुआ है, या जो भी हमारा स्कूलिंग जिस तरह से होता है कि हमें ऑलवेज टॉट दैट सक्सेस इज मच बेटर देन द फेलियर्स, ये सब चीजें जो हमारा इंटरनल सिस्टम में ऑलरेडी बहुत पहले से आ चुका होता है, तो जिसको हम मार्केट में कंट्रोल करना पड़ेगा और वो माइंडसेट वो लाना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इज लाइक ओशन, जैसे आपने बताया। और हमें अपना जो इंटरेस्ट है, राइट, कि हमें आज सिर्फ जो भी हमने ट्रेड लेना है उसमें हमें लिमिट रखना पड़ेगी कि इतना आएगा तो काफी है, हमें पूरा नहीं लेके जाना है। और वी कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, वी आर नॉट द बिग guys in the market कि हम पूरा का पूरा कैंडलस्टिक अपने हिसाब से ही प्रिंट कर दें, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते कि हमारा उतना रेंज नहीं है। तो हमें सिर्फ लिमिटेड हिसाब से ही अपना माइंडसेट से ऐसे बनाना है कि मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता हमारे को, ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा एक हिसाब से, राइट। और जैसे आपने बताया कि पूरा पैसा मार्केट का हम नहीं ले सकते, बहुत इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, उनका भी टारगेट फिक्स रहा होता है। यस, वो भी ऐसा, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज्यादा है, तो उनके 1-2% पे भी एक पूरा कैंडल बन जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन उनका भी टारगेट एकदम सेट होता है कि भाई आज मुझे इतने 2%, 3%, 1% इतना ही चाहिए,
वो भी ये Yes. सोच कर नहीं आता है कि मैं आज ना मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं तो 50% ही कमाऊंगा, Hmm. राइट? तो जब Right. उस लेवल पर पहुंचकर जिसके पास इतना पैसा है, हु कैन चेंज द गेम ऑफ द मार्केट, वो इतना कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड है, तो हम तो बहुत ही छोटी मछलियां हैं। Yes. Yes. तो अगर हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो हम तो मारे जाएंगे, Yes. और वही होता है एक्चुअली। Yes. तो वी हैव टू बी लिमिटेड, और अपने आप को, आपको यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी मुझे लाइन भी लगी कि Behave. Yeah. हाँ हाँ, Behave in our own manner for our interest. ऐसा कुछ. राइट। कोई नहीं सकती। आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। 4 मिनट लेंगे हम अपनी गोल राइटिंग और ग्रैटिट्यूड राइटिंग को, जिसको कि हम कंसिस्टेंटली करने वाले हैं। मैंने अपनी इतनी जर्नी में, सर के साथ इतने सालों की जर्नी में यही सीखा है कि 95% जो सक्सेस का राज है असली, वो कंसिस्टेंसी है। एंड सर इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट एनीथिंग। तो इसीलिए हम भी अपने गोल राइटिंग और बुक रीडिंग सेशन और ग्रैटिट्यूड राइटिंग में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे। चाहे थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन देंगे जरूर। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से अपनी डायरी और पेन उठा लें और अपने जो गोल्स हैं वो लिख लें। अगर कुछ नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है तो मैं सिर्फ उनको बता देना चाहूंगी कि आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल लिख सकते हैं कि अगले 3 महीने में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और अगले 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपको गोल लिखना है। और आज पूरे दिन में आप किस बात पे ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं, यानी कि आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आपको वो ग्रैटिट्यूड भी लिखना है। जो भी आपको याद आ रहा हो, दैट यू कैन राइट। लिख लिया? हेलो हेलो हेलो, लिख लिया सबने या लिख रहे हैं अभी भी? Almost. ओके ओके, टेक योर टाइम। डेली अलग अलग लिखना है. जो मन में आए वो लिखना है। इसका एनालिसिस हम 1 Class. महीने बाद करेंगे। हाँ, 1 महीने बाद करेंगे। अंसार जी का भी मैसेज आ गया, डन। जो मन में आए उस टाइम वही लिखना होता है। अच्छा. जैसे कल मैंने बताया था ना कि मैंने 1 महीने बाद ये एनालाइज किया कि मैं रोज यही लिख रही हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, वो जरूर लिख रही हूँ। बाकी चीजें चेंज हो रही हैं। तो चलिए संतोष जी से पूछते हैं, आज उन्होंने ग्रैटिट्यूड में क्या लिखा? आज पूरे दिन की कोई घटना। एक तो मेरा ऑफिस का हुआ था, प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा गया आज। वेरी नाइस। मतलब ऑलमोस्ट पूरा ऑफिस था, तो उनके सामने जो प्रेजेंटेशन दिया था, जो भी ईयरली एक्टिविटीज था, वो बहुत अच्छा गया था। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड आप किसको देना चाह रहे हैं? अपने आप को? अपने आप को। वेरी वेल डन, बिकॉज सेल्फ लव इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसको हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस कर जाते हैं आजकल, है ना? हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि उससे अच्छे से बात करनी चाहिए या ये करना चाहिए, बट आई फील अपने आप को भी पैम्पर करना, अपने आप से बात करना, अपने आप को ग्रैटिट्यूड करना, दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ लिखा है ग्रैटिट्यूड पे? और भी है। ओके ओके, बट यू डोंट वांट टू शेयर। एनीवन एल्स? अंसार जी, आप बताएंगे आज क्या ग्रैटिट्यूड में लिखा आपने? मैंने ना आज कम से कम 15 किलोमीटर साइकिल चलाई होगी, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, मेरा थोड़ा सा बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत बढ़िया, बिकॉज हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस बॉडी में। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम। सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इस बॉडी में, आपका दिमाग ही तभी चलता है जब आप हेल्दी रहते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा। कल का सेशन बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू ऑल, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, कि आप इतना कीमती समय
में से कुछ समय बुक रीडिंग सेशन के लिए निकाल कर ला रहे हैं।